Very good afternoon to all of you. Thanks for joining us here on Mirror Now. I am Afrida Rahman Ali. First up, big breaking news coming from Punjab. Navjot Singh Sidhu resigns as the Punjab Congress chief. Sidhu submits his resignation to Sonia Gandhi, says will continue to serve the Congress, also says can never compromise on Punjab's future, writes in his resignation letter that the collapse of a man's character stems from compromise, something that he is unwilling to do. Well, Captain Amrinder Singh's first reaction on Sidhu's exit, where he says Sidhu is not a stable man, where he says, I told you so. I told you so. He's not a stable man and not fit for the border state of Punjab. That is the reaction coming now from Amrinder Singh on the resignation of Navjot Singh Sidhu as the Punjab Congress chief. है कि यहाँ जब इन्होंने देख लिया नवजोत सिंह सिद्धू ने कि चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बन गए और कांग्रेस आला कमान की तरफ से ये कहा जा रहा है कि चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू दोनों के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा, इसका मतलब है कि अब भी ये संभावना उनको लगती है कि हो सकता है 2022 का चुनाव तो लड़े, लेकिन जब मुख्यमंत्री की बारी आएगी तो वो पद शायद इनको ना मिले और श्योरिटी चाहते हैं सिद्धू। यही कारण है कि उन्होंने एक और दांव खेला है और प्रदेश अध्यक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। Yes, Ranjita, they're telling us that this is Sidhu's reaction to the fact that Congress actually announced elections in Punjab will be fought under both Charanjit Singh Channi and Navjot Singh Sidhu, which my colleague was saying something that did not go down well on Sidhu. He wanted to be projected as the chief ministerial candidate. So clearly the fact that he would have to share space with Channi is something that perhaps Sidhu did not envisage, or at least was not acceptable to him. That is one of the reasons, one of the narratives that is of course being spoken about right now, that here is a man who was upset with the recent decisions of the High Command. और दूसरे ही दिन यानी कल चंडीगढ़ पहुंचेंगे अरविंद केजरीवाल। इन दोनों चीजों को एक साथ जोड़कर देखने की बात कांग्रेस के नेता कह रहे हैं, तो क्या इस बात में भी कोई सच्चाई है? क्योंकि जिस तरह के नवजोत सिंह सिद्धू के फैसले रहे हैं, जिस तरह के उनके बयान रहे हैं, ये माना जाए कि नवजोत सिंह सिद्धू इधर के दिखते दिखते उधर के हो जाते हैं। पहले उनको ये था कि कांग्रेस पार्टी उनको एक बड़ी जिम्मेदारी दी, प्रदेश अध्यक्ष बनाया, प्रदेश अध्यक्ष के बनते ही उन्होंने ये फॉर्मूला शुरू कर दिया या ये कहे कि ये पटकथा लिखना शुरू कर दिया कि किस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह की मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनी जाए। जब वो बात आगे बढ़ी, उसके बाद अपने लोगों को सेट करना, अपने लोगों को मंत्रिमंडल में लाना, तो ये तमाम Okay, so Ranjita again reporting on the fact that Sidhu's supporters did not find place in the recently rejigged Punjab cabinet. That could be another reason why he was upset, because he clearly talks about being compromised. That's the word he uses, and he says that that the collapse of a man's character stems from compromise, and he also says that he is cornered. So if you actually try to read between the lines, it's very clear that Sidhu is not exactly pleased with the recent state of affairs. Ranjita was also pointing to the fact that he has always dangled the option of joining Aam Aadmi Party, and since he is known to be unpredictable, he is spoken of as somebody with a strange track record where he can switch parties if he wants to. That remains a possibility. Now that is another aspect which is being looked at, whether Sidhu can actually consider switching sides again. Can he even take the quantum leap of joining the Aam Aadmi Party? At the moment, he has taken the decision to quit, but he says in his resignation letter that he will continue to serve the Congress Party. के
बाद अब एक कयास और एक बयान जो है वो कांग्रेस में चलना शुरू हो गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू ऐसे आदमी है जिन पर भरोसा करना कांग्रेस लीडरशिप की गलती है। इस गलती को क्या कांग्रेस इसको सुलझा पाएगी? ये ऐसी ही बात हो गई कि चीजों को सुलझाने में लगी हुई कांग्रेस एक बार फिर और बिगड़ती हुई दिख रही है। अब तो न कैप्टन रहे, मुख्यमंत्री नहीं है, अब चन्नी मुख्यमंत्री है, और जिस जिस घोड़े पर दाव कांग्रेस पार्टी लगा रही थी नवजोत सिंह सिद्धू पर, वो घोड़ा ही धोखा दे रहा है कांग्रेस पार्टी को। जिस तरह से वो प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्होंने छोड़ दिया, ये बात इस बात को लेकर कोई भी नेता कॉन्फिडेंस नहीं ले सकता है। किसी को इस बात पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा कि अब अगला कदम नवजोत सिंह सिद्धू का क्या रहने वाला है। तो अब जो स्थिति है उसमें देखना होगा कि कांग्रेस लीडरशिप किस तरह से डिसीजन लेती है। क्या एक बार फिर नवजोत सिंह सिद्धू को मनाने की कोशिश कांग्रेस पार्टी की रहेगी, या फिर जिस तरह के कड़े फैसले लगातार ये कहा जा रहा था कि कैप्टन को हटाकर कांग्रेस ने एक कड़ा फैसला लिया है, तो अब नवजोत सिद्धू को लेकर कांग्रेस क्या कड़ा फैसला लेती है? Okay, so let me go across to senior journalist Vipin Pabbi joining me on the phone line. Good afternoon, Mr. Vipin Pabbi. I want your reaction to this big decision taken by Sidhu and a dramatic twist now coming in on Punjab politics with Sidhu stepping down as the Congress unit chief. Well, yes, Sidhu has always been unpredictable, and this kind of may not talk to some people who know him closely, who have been watching him. He has been very unpredictable, and he has been showing his anger. He has been throwing tantrums even earlier too. And this time, last time, he said that when Captain Amrinder Singh was the chief minister, he told everyone, वो किसका कैप्टन, मेरा कैप्टन तो राहुल गांधी है. So he has been always rebellious like that. Even when Mr. Channi was made the chief minister, he was acting in the forefront. He was having his pictures clicked with an aircraft and then holding the chief minister's hand, taking him to the Golden Temple, patting him in the back. All those things were there, and he thought that he will have his say in almost everything. And that is why even the swearing-in ceremony or the constitution of the cabinet also took so much time. It took 3 meetings, and then final meeting was held without Mr. Sidhu. Earlier, he was also present, but last 1 or 2 meetings, the chief minister was called directly by the party high command, so that they could discuss it among themselves and then finalize the list. And that time also it was known that Navjot Sidhu was not happy with some of the inclusions or exclusions, and he had made it known to the party high command. But this time, I think Mr. Rahul Gandhi and Priyanka, they had made up their mind, although they made up their mind very, very late, almost at the 11th hour. There were changes even at the 11th hour in the list of ministers. But that left Navjot Sidhu quite unhappy because he did not have his final say in it. And therefore, he had been a little quiet, and Yes. silence was also, that many people were thinking that he is up to something, perhaps. And that's what it has come out today, that he has resigned as PCC chief. Yes, that's an interesting perspective what you're saying, that Sidhu clearly was not taken into confidence when it came to certain big decisions by the party high command, and that did not go down well. Secondly, I want to ask you, Mr. Pabbi, that do you think the fact that the Congress leadership made it very clear elections will be fought both under Channi and Sidhu, that it also became a problem? Was Sidhu expecting to be projected as the CM candidate for the next elections? Yes, in fact, that is what he had been asking and demanding. And in fact, he made Harish Rawat say it also. Just after his, the chief minister was selected and sworn in. So he said the face of the party would be Navjot Sidhu. It was very clear it was coming from the person who was dealing so closely with our Punjab affairs. He was in charge of it. And he said Navjot Sidhu will be the face. And now, after that, he retracted. Not he, actually, the party high command retracted, because that would have sent a very wrong signal to the people of Punjab that you are having a Dalit chief minister, but you are saying that he is the chief minister only till about the elections, because the face would be of Navjot Sidhu. So then they retracted the statement, and Mr. Randeep Surjewala came out with a clarification that both of them will be the faces of the party. But frankly, it would have become very, very difficult for Navjot Sidhu to be the chief minister in case Congress wins this election, because the message
and if Mr. Channi was removed as chief minister, would go to other states, UP and other places where everyone, other parties would say that they are using Dalit card to win elections, but after that they don't care and they made somebody else. So I think Navjot Sidhu understood this, and he realizes that it will be very, very difficult to dislodge Channi now, but he still wants to have his say in all those matters. How do you see Captain Amrinder's reaction? Okay, before I come to you on that, Ranjita is reporting on the latest developments. Let's listen in. की भी आपको लग रहा था कि ये उम्मीद है, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि कैप्टन की छुट्टी सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि विधायक नाराज थे, क्योंकि कांग्रेस का जो इंटरनल सर्वे था उस सर्वे में भी कैप्टन की पॉपुलैरिटी कम हो रही थी, और वही सर्वे नवजोत सिंह सिद्धू की पॉपुलैरिटी को बढ़ाता हुआ दिखा रहा था। और कांग्रेस यही कारण है कि दांव खेल रही थी कि कम से कम इसी बहाने 2022 का जो विधानसभा चुनाव है और कृष्ण रहे हैं, उस दोनों चीजों का फायदा कांग्रेस को इस तरह से मिलेगा कि कांग्रेस एक बार फिर पंजाब में सत्ता में आ जाएगी। लेकिन ये जो अंदर खाने लड़ाई चल रही है, जो घर की जो लड़ाई है कांग्रेस की, इसको कांग्रेस किस तरह से ठीक करेगी, क्योंकि इस चुनाव सर पर है और लगातार कह सकते हैं कि बैंडेज लगाया जा रहा है, चोट पर मरहम लगाने का काम हो रहा है, लेकिन यहाँ तो बड़ी सर्जरी करनी पड़ी कांग्रेस को, क्योंकि सिद्धू जिस तरह के रंग दिखा रहे हैं, ऐसे में कांग्रेस पार्टी भरोसा करे तो कैसे करे सिद्धू पे। Right. So Ranjita again making a very important point there that perhaps for the Congress party it became a problem of not being able to handle somebody like Navjot Singh Sidhu. Mr. Pabbi, is that something that you also agree with, that he became a man too much in a hurry, he had ambitions, and he was feeling compromised, as he himself said in that letter, particularly because as the Congress unit chief also, he was not taken into confidence for a number of decisions. Right. In fact, he's quite a maverick. All his attitude all along, in fact, the last 3-4 years in particular has been like that. He left the BJP in a huff. And he was asked to shift his seat to Karnal and all that, and then he tried to join the Aam Aadmi Party. When the Aam Aadmi Party did not give him an assurance that he could be the party's chief minister face, he did not join that, and then finally joined Congress. But there also, right from the beginning, he has been wanting to be either the deputy chief minister or the party president, which he finally got. But after doing so much of damage to the Congress was in a sitting pretty about 5-6 months ago. But he came in and he actually rocked the ship. And he made sure that, there is a change of government. He would have himself liked to be the chief minister, but Captain Amrinder Singh also put in his foot down and he said that no, nothing doing it. He can't be the chief minister, because if he becomes the chief minister, or even if he is projected as chief minister's face, I am going to oppose him, which was a clear signal that he would either form a regional party or tie up with some other political party, but will have a candidate against Navjot Sidhu and perhaps against some of the candidates of Congress also. And that is one of the reasons perhaps that he is in Delhi and he is meeting some top political leaders there. But as far as Navjot Sidhu is concerned, he has been always unpredictable. He has been very loudmouth about everything, and he doesn't care whether what kind of statements is he making and what kind of body gesture he has, which he showed when the swearing-in ceremony took place. And now he wanted to have his complete say, which was denied to him. And he's making a mockery of it all. Yes, and I agree with what you said, that it looks like as if the Congress has bitten more than that it can chew. But what do you make of Captain Amrinder's reaction now? He seems to be upbeat, if I may use that word, with these developments where he says, I told you so, as if it validates his position on Sidhu of being an unstable man. No doubt about it, yes. He must be feeling delighted, but he may not also be shocked, because the kind of behavior that Navjot Sidhu had been displaying over the years also, so it's very, very unpredictable. But certainly, maybe Captain Amrinder Singh may have the last laugh. Okay, I'm interrupting you here, Mr. Pabbi. Apologies, we are cutting across to the press conference addressed by the Chief Minister of Punjab. ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਆਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਂਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਗੇਟ ਬੰਦ ਮੈਂ ਅਜੇ ਹੁਣੇ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਿਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੋੜਨ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸੈੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਏਗੀ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ। ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰਹੇਗੀ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰੋਕ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਹੁਣ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਆ ਹਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲੇ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਇੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਸੌਦੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਔਖਾ ਕਰਤਾ ਆਮ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਖਬਰਾਂ ਹੁਣ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। सर लाइव जा रहा है, आप स्टार्ट कर दो पीसी। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਾਈਵ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਹਾ बस अभी बातें कर रहे हैं आपस। निपेंद्र शुरू कर लो यार, लाइव जा रहा है, देखो समझा करो। कोई शुरू इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, कोई पत्रकार, चाहे पंच सरपंच है, ब्लॉक समिति का मैंबर है, जिला परिषद का मैंबर है, म्यूनसिपल कमेटी का मैंबर है, कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है लोगों का, छोटा है बड़ा है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਅੱਜ ਜੋੜ ਦੇਣਾ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਗੇ। ਉਹੀ ਆਇਡੈਂਟੀ ਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਵੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਮਤਲਬ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕੇ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਖਤਮ ਕੰਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੰਪਲ ਸਾਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਸਾਦੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਬਣ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਰਗੇ ਰਹੋਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮੂੰਹੋਂ ਹੁੱਜਾ ਮਾਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੱਧ ਤੋਂ ਬਦਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਟਸ ਤੇ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਣਾਉਣ ਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਾਰਡਰ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਨਦਾਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅੰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਪੇਟ ਭਰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਓ, ਰੱਦ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ। ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਰੁਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਰੁਲ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ ਇਸ ਪਰਪਸ ਦੇ ਲਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੜ ਤੋਂ ਰੱਦ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਵਰਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਜੋ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਗੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਐਸੀ ਪਾਵਰਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਮੈਂਡ ਕਰਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰੋ।
नहीं सानू विधान सभा बुला के रद्द करने पैण। बिल्कुल क्लीयर है सी साडा स्टैंड, पंजाब सरकार का स्टैंड कोई कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस ना आए उहदे वास्ते असीं जिम्मेवार नहीं होवांगे। असीं कह रहे हैं कि अननैसेसरीली पंजाब नूं दबाया ना जाए ते ना असीं दबण देना है। दूसरा, पंजाब दे किसान ते पंजाब दे खेत मजदूर ते 1 लाख करोड़ रुपए का खर्चा कर्जा है। केंद्र सरकार ने ਲੱਖਾਂ करोड़ रुपए के कर्जे कॉरपोरेट सैक्टर के बड़े बड़े इंडस्ट्रीलिस्ट के माफ किए। इसलिए मैं उन्होंने अपील करदा कि पंजाब सरकार ने इनिशिएटिव लिया है 2 लाख तक के कर्जे माफ किए। हुण असीं गरीब लोगों के 25,000 तक के कर्जे माफ कर रहे हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट जा चुके हैं। वो ये कर्जा माफ करे, वजन चके किसान का, ताकि किसान दे सके। किसान खेत मजदूर खुशहाल होएगा तो सूबा खुशहाल होएगा तो देश खुशहाल होएगा। इसलिए अज मैं तुहानूं स्पैशली इस वास्ते बुलाया जिन्हें किसान एजुकेशन के दौरान शहीद हो चुकी है, वो एजुकेशन की भेंट चढ़ चुकी है, उन्होंने वास्ते असीं नौकरियां का प्रदान कर दिता है। कल मैं एक किसान के घर जाके उन्होंने नौकरी दे के आया। तुसी जे मेरे नाल होंदे तो तुसी भी रो पैंदे। किसान जिन्हों आप कहने जी बड़ा लैंडलॉर्ड है, ये है साडा किसान, उहदे पास बेचारे कोल घर भी नहीं है जिहदे घर मैं कल गया सी। आ जिहड़ा हुण 5 लाख रुपया सरकार ने दिता उहदे नाल वो अपना ढा के घर बना रहा है। उहदा ब्याह नहीं होया क्योंकि उहदे कोल जमीन नहीं है, उहदे भाई का भी ब्याह नहीं होया, उम्र लंघ गई है। ये हालात है मेरे किसान दी। इस करके इस चीज़ नूं सीरियसली समझना पएगा। केंद्र सरकार नूं तुरंत सही रास्ते दे स्टैप लेने पैणगे। बहुत संकट विच अज मेरी किसानी, अज बहुत संकट च मजदूर, इस नूं मेरे को नहीं सहया जा रहा। मैं पिंडां च घुमदा, कल किसान दे घर गया, उहदे घर ते छत नहीं है। क्यों नहीं है? तो फिर असीं वो छत देण तो बिना उसकी जिहड़ी रोटी रोजी का साधन है वो भी खोण लगे। मंडी सिस्टम को खत्म कर रहे हैं। MSP गारंटीड इन्हों करना चाहिए कि असीं देवांगे, फायदा देण दी बजाय नुकसान कर रहे। इसलिए मैं पहला भी कहा सी अपनी सरकार जब भी मैं इस गल पर लड़ता रहा, ये अमेंड किए ये रद्द होने चाहिए। ऐसी विधान सभा का सैशन बुलावांगे, लेकिन उस तो पहला मेरी केंद्र सरकार को अपील है कि वो इन्हों रद्द करे। दूसरा ये है कि किसानी ते बाकी दे अदारे है जिहड़े उन्होंने बख करना चाहिए। जे किसान नूं लोन देना भी है सबसिडाइज रेटां ते दो, ताकि किसानी कामयाब हो सके। किसान दे ट्रैक्टर ले लेंदे, ट्रैक्टर का लोन ही नहीं उतरता, ट्रैक्टर जमीन लेके लंघ जाता है। इस करके ये सारियां किसान और खेत मजदूर वास्ते पंजाब सरकार किसान यूनियन दी संयुक्त मोर्चे के नाल खड़ी है। उन्हां नाल रल के लड़ेगी। हर तरीके का ऐसी पिछे आ उन्होंने वो रहनुमाई करन, जिस तरह उन्होंने एजुकेशन की रूपरेखा होएगी ऐसी करांगे। मैं आप ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰਾਂਗਾ ਜੇ ਇਹ ਖਤਮ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ, ਚਾਹੇ ਸਾਈਕਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਾਂ, ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੌਵਾਂਗਾ, ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਦਿੱਲੀ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਕਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ MP ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ PM ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਣਗੇ।